been an incredibly tough and heartbreaking week. The whole world have seen what happened in Kabul, Afghanistan. It really breaks my heart and everybody's heart. Here today, I've got a couple civilian stories to share. These are the lucky civilian plane, a last few civilian airplane departed out of Kabul before all the madness descend. The first story came from my friend Roman. Roman is a Ukrainian guy who's been operating a firefighting Antonov 32 in Turkey last week. Okay, listen up. Selling our place, buying this place. Thoughts? Negative me. No. Shouldn't have started with you. Spontaneous me. Already ordering drapes. Antisocial me. He wrote to me and we were talking about to film about the Antonov 32 firefighting project in Turkey next month. And suddenly he said, I'm off to Kabul because the situation is worsening day by day. I have to go there to pick up our company airplane to bring it back to safety. And he wrote to me saying, I don't know, there will be email again with you and me, Sam, because we don't know what the situation is. And then he went to Kabul and I'm really, really worried about it. And when I saw the TV, all the situation unfold, and I quickly contacted him, and he was actually among one of the very lucky that he flew out on Sunday, the 15th August, on the Antonov 26 before all the madness happened. And here is Roman's story. I arrived on Sunday morning with Turkish from Istanbul, and I had with me the captain and flight engineer to take the aircraft. Rest of the crew was already in Kabul, so we went from arrival directly to ramp 9, which is Afghani Air Force ramp, and there we just prepared aircraft for flight and took off. All the permits were already done in advance, and like everything was very calm. 1 hour before we departed, heavy helicopter traffic began between the U.S. embassy and the military side of airport. There were like shuttle flights every 3 minutes. We took off at 12:01 and we started up at 11, and we have been holding. They were holding us for an hour because 2 flights were arriving, and then there was this helicopter traffic. So we were already running out of fuel because our next destination was Manaf, and it's 4.5 hour flight. It's a lot for Antonov 26. So we already were running out of fuel, and engines were overheating already. So we got quite nervous, and then they finally cleared us for takeoff. The second story is a PIA A320 who got left behind while all this madness is happening. The ATC were gone and the plane was left on the runway, and the captain made his own decision to take off, to take the plane and the passengers and crew to safety. And here is personal recounts of what happened that day with PIA captain Masoud Bijrani. और हम 10-10:15 बजे काबुल में पहुँचे. तब तक सूरत हाल नॉर्मल थी. ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल जिसे कहते हैं ATC, वो फुली फंक्शनल था. हमने लैंड किया, प्रॉपर पार्क किया और यहाँ से हम फेरी फ़्लाइट लेके गए थे. उसके बाद हमारा ग्राउंड टाइम को 3-3.5 घंटे था. हमने दोपहर को वापस डिपार्ट करना था. तो जब हमने बोर्डिंग करा ली, सारे पैसेंजर्स तकरीबन बैठ गए, कुछ रहते थे. इतने में एयर ट्रैफिक कंट्रोल की आवाज़ आई कि ये ड्यू टू सम इमरजेंसी इन द ATC हम इवैक्यूएट कर रहे हैं कंट्रोल टावर को. अपनी जगह को डिसलोकेट करते हुए हम मोबाइल यूनिट में शिफ्ट कर रहे हैं और फिर आपको कॉल बैक करेंगे. इतनी देर में आई कुड सी कि लोग मुख्तलिफ जगहों से कुछ दौड़ते हुए आ रहे थे, जो मुझे कुछ हालात नॉर्मल नहीं लगे. बहरहाल मैंने यहाँ कंपनी से रब्ता किया इस्लामाबाद में, उनको बताया. फिर उन्होंने कहा जी हम सबको बता के फिर आपको कॉल बैक करते हैं. 5-10 मिनट में उनके कॉल आई मुझे. तो उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे
कि वो टावर शिफ्ट कर रहे हैं और हमारी एटीसी से बात हुई है, वो जो ही वहाँ पे आएंगे, क्योंकि अभी वो एयरपोर्ट उन्होंने सिविल के लिए बंद कर दिया है, वो अपने ट्रूप्स को इवैक्यूएट कर रहे हैं, तो वो आपको 15 मिनट में पुश बैक दे देंगे। उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारा CEO, हमारा डायरेक्टर फ्लाइट ऑप्स और बाकी तमाम फ्लाइट ऑपरेशन की टीम जो थी, दे आर इन द लूप। तो टावर ने जब रब्ता किया तो सबसे पहले उन्होंने हमारा जो कंपनी 777 था उसको रवाना किया वहाँ से, उसके बाद एक और एयरलाइनर था कतर एयरवेज, उनको रवाना किया, फिर एयर इंडिया का एक जहाज़ था उसको रवाना किया। आखिर में हम थे, जब हमारी बारी आई तो उन्होंने कहा कि जी हम सिविल एयरक्राफ्ट ट्रैफिक के लिए ये सस्पेंडेड है ऑपरेशंस। तो मैंने पूछा कब तक, उन्होंने कहा जी हमें भी नहीं पता, और ATC से मैं पूछ रहा था, उनको भी नहीं पता था कि कब तक सिविल ऑपरेशन सस्पेंडेड रहेगा। तो मीनवाइल मैंने उन्हें कहा जी जब तक डिपार्चर नहीं देते आप मुझे पुश बैक तो देते। खैर हमने जहाज़ पुश बैक करके इंजन स्टार्ट किए और टेक ऑफ पॉइंट पे चले गए। जब टेक ऑफ पॉइंट पे चले गए तो तब उन्होंने कहा जी अभी भी ऑपरेशन इज़ सस्पेंडेड, आपको हम टेक ऑफ नहीं दे सकते। उस वक्त मैंने जो को पायलट थे मेरे साथ सज्जाद गनी साहब, उनको मैंने लूप में लेके ये कहा कि अगर नहीं देते तो हम बग़ैर ऑथराइजेशन के टेक ऑफ कर जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वायलेशन फाइल होगी हमारे ख़िलाफ़। लेकिन बात यह है कि उस वक्त जो था ना, हमें दिमाग में जो चीज़ मेरे आ रही थी वो सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स, सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड द सेफ्टी ऑफ द क्रू था। ठीक है, क्योंकि देखें एज ए ह्यूमन, कप्तान तो मैं हूँ ही लेकिन उसके साथ तो मैं इंसान हूँ अंदर। एज ए पाकिस्तानी और एज ए PI एम्प्लॉई मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि खुदा न खासा अगर हम पकड़े गए या इन्होंने हमें यहाँ पे रोक लिया तो हमें यरगमाल बना के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जा सकता था। ठीक है ना, तो पाकिस्तान कुड हैव बीन इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन। ठीक है ना, तो वो मैं नहीं चाहता था किसी सूरत में भी कि ये नहीं हो, तो इसलिए मैंने आई हैड टू टेक को पायलट ऑन बोर्ड विद दिस डिसीजन के जी कम वट में वी हैव टू टेक ऑफ। ठीक है ना, तो इतने में थोड़ी देर बाद कोई 1 घंटा ये गुजर गया हमें वहाँ पे रनवे के करीब खड़े होकर। ATC फाइनली उन्होंने कहा जी काबुल ATC 0, दैट मीन्स के देयर इज़ नो ATC, अब आपकी जो मर्जी है जहाज़ पे खड़े रहें, पार्क करें, जो मर्जी आए करें। सारे मिलिट्री ट्रैफिक थी वहाँ पे, ऑन देयर ओन टेक ऑफ कर रहे थे। उस वक्त सिर्फ मैंने केबिन क्रू में एक अनाउंसमेंट की कि जी आप अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाएंगे, टेकिंग ऑफ। तो हमने जल्दी से वहाँ से टेक ऑफ किया। बस अल्लाह ने हमें इज़्ज़त बख्शनी थी या जान बख्शनी थी, हमें वहाँ से निकालना था। अल्लाह ने मदद भी की और मौसम भी बड़ा अच्छा था कि विजिबिलिटी इतनी अच्छी थी कि मैं विजुअली बाकी ट्रैफिक को अवॉइड किया, क्योंकि मिलिट्री ट्रैफिक काफ़ी थी। अगर ये क्लाउडी होता मौसम तो मेरे लिए बड़ा दुश्वार होता। बस एज आई सेड के जी अल्लाह ने मेहरबानी करनी थी। वहाँ से 15,000 या 16,000 फीट तकरीबन पहुँचने के बाद तो मेरा पॉजिटिव रेडार कांटेक्ट हो गया दोहा वाले के साथ। दोहा जो काबुल का ATC जो है वो दोहा में बैठ के वो रन करते हैं, वॉक पे बैठ के। उन्होंने फिर हमें मज़ीद ट्रैफिक सेपरेशन दी, रेडार हेडिंग्स दे के डिफरेंट उस पर। फिर उन्होंने पाकिस्तान अफगानिस्तान एयर स्पेस क्रॉस करा के, तो दैट्स हाउ वी गॉट इनटू द पाकिस्तानी एयर स्पेस। In between breath. The very last civilian airplane landed at Kabul was Turkish Airlines flight TK706 from Istanbul. It was a Boeing 777-300ER. It landed on Monday, 16 August morning. However, it didn't go to the usual commercial terminal as that site's already occupied by a lot of people who really desperate want to leave the country. So the airplane was actually parked in the military side with Turkish forces protecting the airplane. After an unsuccessful attempt earlier, the Turkish Airlines 777 finally took off from Kabul after 6 hours of waiting on the ground due to congestion and military traffic. It safely made its way back to Istanbul. So right now you might ask why there's no civilian airplane going into Kabul to take rescue people, and that's because the airspace is completely assigned to military, and civilian airplanes are actually steered clear of Afghanistan airspace. They don't fly over because there's no ATC to support that.
So right now, military airplane, it's like C-17, A400M, C-130, etc., are going to Kabul to take the rescue people to many Air Force bases or nearby countries. From these Air Force bases and nearby countries, they'll be transported again on civilian airplane back to their respective countries. So we already see airlines like Lufthansa has operated A340-300 to Uzbekistan, which is not where normally they would fly to help out. And we expect many US airlines will join in the Kabul airlift to take 20 to 30,000 Afghans to US. And this will include United, Delta, American, Atlas Air, Khalida, National Airlines, and there will be an enormous airlift out of Middle East US Air Force bases. Again, we have seen aviation play a major role in uplifting the people when it's needed. We hope the situation will continue to improve and stabilize, and I will keep you guys updated with latest situation